welcome to Barcelona. Finally, we have reached Barcelona, right? Yes. So fun. Finally, you got your t-shirt, right? Yeah. From the official store of Madrid, right? Yeah. In Barcelona. Hi guys, Assalamualaikum and welcome to Travelsheesh, जहाँ मैं सदर मैं हूँ आतिफ। हम लेकर चलते हैं आपको डिफरेंट प्लेसेस पर। आज हम फिर आपको लेकर जा रहे हैं एक और जगह। Yes, we are at the airport and this time is an unplanned visit to Barcelona. हम जा रहे हैं स्पेन में, but this time we are going through Turkey. पहले हम जाएंगे इस्तांबुल और उसके बाद फिर पहुंचेंगे बार्सिलोना. So let's start our trip and take you along. Let's go. So guys, we have reached Istanbul airport. हमारी फ्लाइट जो है वो हाफ एन आवर लेट है. इस दफ़ा हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली है. So 4 hours from कतर हम पहुँचे हैं इस्तांबुल एंड आगे हमारे 4 hours हैं टू बार्सिलोना. So let's wait for the next flight. Guys, and welcome to Barcelona. Finally, we have reached Barcelona, right? Yes. Yeah. We have a long flight, बल्कि it's not very long क्योंकि it's connecting flight. So पहले हम 5 hours की flight ली हमने. We drop into 3 hours. Istanbul and then वहाँ से जो है हम आए हैं 3 hours की flight में बार्सिलोना. यहाँ भी हमारा जो है चेक इन प्रोसेस थोड़ा इजी था. इमिग्रेशन पे फिंगरप्रिंट्स भी नहीं हुए और पिक्चर भी नहीं खींची, तो हम 10 minutes में फिर दोबारा बाहर आ गए. राइट आका? Yeah. So let's go out and enjoy Barcelona. Let's go. So guys, Barcelona has a very lively vibe. यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हमें नज़र आ रहे हैं. अब तक हम जहाँ गए हैं वह बहुत टूरिस्टिक प्लेस नहीं थी, बट बार्सिलोना इज़ वेरी वेरी टूरिस्टिक. Fun. Can you see up there? What's there? They look cute, right? Guys, on my backside you can see the Hotel Catalonia and you can see the mannequins are over there. They look really very cute. And guys, on the backside you can see the oldest cathedral and it has a giant architecture and detailing is so good. You can see बहुत ही ज़्यादा जो है इस पे काम किया गया है. They have the marvelous door and the details are very good. And beside the cathedral, this is the Christmas market as we are in here in December. So you can see a lot of Christmas market over here and I think रात में ये और ज़्यादा अच्छी लगेंगी. You can see the sky over there behind me. It looks really very blue. So weather is good, decorations are good and the place is really good. Right, Afan? Yes. And guys, on my backside you can see the famous spot where the Zindagi Na Milegi Dobara का scene जो है shot हुआ है. If you have seen that movie, you can recognize this place. And guys, now we are entering the Gothic quarter. One more famous spot for the tourists. लोग यहाँ आकर काफ़ी कुछ enjoy करते हैं. You can see all the historical buildings and all the monuments are over here. And guys, Gothic quarter is their main square. You can see the cafes as well. So this is the main tourist spot. अभी हमने इसको cover कर लिया है and now we are moving towards another spot. You find the play area everywhere.
So guys, now we are going towards the pedestrian. This is the most famous pedestrian street and most touristic as well. यहीं पे सारी attraction भी है. It is near our hotel as well. So वापस आके मैं आपको अपने होटल का रिव्यू दूँगी. Now we are at La Rambla, which is the famous tourist spot and the walk street of Barcelona. यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं चलते हुए नज़र आ रहे हैं because tourists are mostly over here. अभी टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है तो that's why जो है टूरिस्ट काफ़ी सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. काफ़ी crowded है but the vibe is very good. And there's a lot of people. Yeah, there's a lot of people walking over here. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि स्ट्रीट पे कितने सारे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं. Here you can see some free entertainment. The lady is dancing and singing all her heart out. So guys, this is the La Boqueria, which is the fresh vegetable and meat market. अभी हम अंदर जाकर आपको दिखाते हैं. This is the famous market. So come to visit here, eat here, and shop here. So let's go and see how it is. And guys, here you can see कहीं पर जो है fresh fruits हैं, कहीं पर आपको मिल जाएंगे dry fruits और lots of things. So सारी चीज़ें fresh हैं, they look very fresh, they look very delicious. So if you are into fruits, chocolates and dry fruits, you must come here. It is a very nice market and यहाँ आकर हम बिल्कुल fresh होते हैं. And over there on my back side you can see the fresh fish as well. यहाँ से आप fresh fish भी purchase कर सकते हैं. मैं बिल्कुल एलर्जी का फिश है तो इसलिए मैं इसके पास नहीं जा रही. While Afan and Arif are looking at it. So guys, Barcelona is a very walkable city. You can walk over here and enjoy the streets. And here we found the official store of Madrid in Barcelona. Bellingham sold out. We might have it tomorrow. Afan, that's your favorite store? Yes. So Afan, finally you got your t-shirt, right? Yeah. From the official store of Madrid, right? Yeah. In Barcelona. Enjoy. So guys, Spain is very much hustle and bustle in the night as well. अभी 8 PM हो चुके हैं लेकिन रोडों पे बहुत रश है, लोग बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं. And we are going for dinner as well. But ये है कि यहाँ बहुत जल्दी सन्नाटा नहीं छाता. अभी 8 बज गए हैं और the city is full on. एंड गाइस, अभी हम जिस स्ट्रीट से गुजर रहे हैं वहाँ पर काफ़ी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे हैं, सुपरमार्केट्स नज़र आ रही हैं एंड देसी फूड ऑप्शंस भी हैं, हलाल ऑप्शंस भी हैं. तो यहाँ आकर ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग यूरोप पे. सो गाइस, अभी हम डिनर के लिए आए हैं और यहाँ हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में हैं, विच इज उस्मानिया रेस्टोरेंट. आप देखें सारा डेकोर एंड सब कुछ जो है बिल्कुल ट्रेडिशनल है. लग ही नहीं रहा कि हम आउट ऑफ पाकिस्तान हैं. सो अभी फूड हमने ऑर्डर कर दिया है. लेट्स सी हाउस द फूड. हाय गाइस. सो गाइस, हमें क्या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल गया यहाँ पे? Yes, this one is Usmania restaurant. So हमने कुछ पाकिस्तानी डिशेस मंगाई है.
नान ऑर्डर किए हैं, तंदूरी नान ऑर्डर किए हैं। लेट्स सी कैसा होता है। लेट्स सी। पहले दिन ही हमें पाकिस्तानी खाना मिल गया, राइट? फूड इज हियर। अम्बान ने ली है फिश फ्राई और हमने ली है अचारी दाल। अचारी। सो होपफुली टेस्ट भी हमें अच्छा मिले। हम खाना खाते हैं और बताते हैं कि हाउ द फूड, राइट आदिल? So guys, how's the dinner? It was good. Dinner was amazing. Pakistani taste in Barcelona. Wow. और काफ़ी रीजनेबल मिलता, राइट? Yes, very reasonable price. और वैसे जो है अगर मैं नोट किया मैंने, बार्सिलोना इज cheaper than all other European cities. Afan is happy, right? Hi guys, so we are back to our hotel Caledonian in Barcelona. So मैं आपको देती हूँ अपने रूम का टूर. Let's go. So our room starts from here. This is the closet. ये वॉशरूम है. This is the washing area. Hi guys. Hi. So this one is Afan's bed. Afan, यहाँ आपका बेड बड़ा है, right? Yes. And ये हमारा बेड है. This bed is also No, this Right, is your okay. bed and that's my bed. no, that one is yours. और साथ में टीवी भी है. And ये साइड पे छोटे बेड टेबल्स भी हैं where you can sit, right? और आतिफ हमने कितना का करवाया था? Around 4 nights का करवाया, around 650 euro. 650 euro, यानी कि अराउंड 165 पर नाइट. व्यू देखें यहाँ से नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ, there's a gallery as well. There's a gallery and over there you can see the outside view as well. So it's a nice room, nice and cozy and spacious भी है, right? Yes. So guys, इसके साथ ही करते हैं अपनी आज की वीडियो यहीं पर एंड. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी. बाकी कल हम आपको लेकर जाएंगे एक स्पेशल जगह पे, राइट? Yeah. सो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. Bye.